हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वैन लाइफ इंडियन कपल। व्लॉग शुरू करने से पहले आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया कि आपने हमारे चैनल को इतना प्यार और प्रोत्साहन दिया। वी रियली फील ब्लेस्ड रीडिंग योर लवली कमेंट्स ऑन आवर चैनल। किसी भी कैरावैन का एक मेन पार्ट है लॉन्ज एरिया, जिसका एक मल्टीपर्पज यूज है, जैसे डाइनिंग, रीडिंग, प्लेइंग बोर्ड गेम्स, वॉचिंग टीवी या फिर कुछ फुर्सत के पल गुजारना। लॉन्ज एरिया को कंफर्टेबल बनाने के लिए हमने 4 इंच के ट्विन लेयर फोम को यूज किया है। For proper lumbar support, we have made tilted backrest with memory foam and plywood. We have also fixed 4 seat belts for safety and security. सिटिंग एरिया के सेंटर टेबल के लिए हमने एडजस्टेबल टेबल को सिलेक्ट किया है। यह टेबल एक्सक्लूसिवली कैरावैन या मोटर होम्स के लिए ही बनता है। इसकी हाइट को एज पर रिक्वायरमेंट हम एडजस्ट कर सकते हैं और इस टेबल को हम स्विवल भी कर सकते हैं। कमिंग टू आवर बेड एरिया, इसके लिए भी हमने ट्विन लेयर फोम का यूज किया है, जिसमें अपर लेयर मेमोरी फोम का है। For proper ventilation, this foam has been directly pasted over the bed. The fabric which we have selected is sweat leather. यह फैब्रिक डस्ट प्रूफ, स्टेन प्रूफ और रिंकल फ्री है। बेड के स्लीपिंग स्पेस को एक्सटेंड करने के लिए हमने एक्स्ट्रा कुशन्स बनाए हैं। This is the final look of our lounge area. For all over color contrast, we have used off-white laminate on walls and cabinets.
Now coming to woodwork, we have selected brass concealed handles for our drawers and cabinets. These drawers will be used as storage area during our journey. We have also made a pull-out table for outside dining. For storage of food and beverage, we have installed a pull-out pantry. As we all know that a looking mirror is an integral part of our lives, so we installed a mirror on our microwave cabinet door. वैन को घर जैसा लुक देने के लिए हमने टीक वुड से विंडोज को आउटलाइन किया है। जब हम कैरावैन का डिज़ाइन प्लान कर रहे थे, तब हमारी किड्स की फर्स्ट डिमांड थी एक एंड्रॉयड टीवी विद सराउंड सिस्टम फॉर देयर प्ले स्टेशन। Finally, we all will agree that we can't say no to our kids. Now some update on our electricals. All 12-volt fans and USB ports have been installed at various locations. Our 12-volt exhaust vent fan is working perfectly. अपने किचन काउंटर के वर्किंग स्पेस को एक्सटेंड करने के लिए हमने सिंक के ऊपर रिमूवेबल वुड कवर लगाया है। Since we all are foodies, so to extend the cooking space, we have installed a folding table. इस टेबल को हमने कोलैप्सिबल ब्रैकेट के साथ हमारे किचन काउंटर में फिक्स किया है। To travel comfortably when the van is on move, we have installed twin passenger seat for friends and family.
स्टोरेज स्पेस को बढ़ाने के लिए हमने कॉकपिट एरिया के ऊपर हेडलाइनर शेल्फ लगाया है। नाउ सम अपडेट ऑन वॉशरूम। जैसे कि आपने हमारे प्रीवियस ब्लॉग में देखा था कि हमारा वॉशरूम WPC से बना हुआ है जो कि वाटरप्रूफ है। उसको फिनिशिंग लुक देने के लिए हमने सेल्फ एडहेसिव PVC विनाइल वॉलपेपर का यूज किया है। Friends, work is still under progress. We have sent our van for some more aftermarket work. We will really appreciate if you like and subscribe our channel. See you soon in our next vlog. Till then, goodbye, stay safe and stay healthy.